Hello viewers, the question is three capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. Part A, what is the total capacitance of the combination? Part B, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply? So in this problem there are three capacitors each having same capacitance of 9 picofarad value. They are connected in series. And in first part we have to find out the total capacitance. So to find out the total capacitance we have to use this formula 1 upon Ct, which is the total capacitance, is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Here C1, C2 and C3 are the respective capacitance of these capacitors. So this is 1 upon 9 plus 1 upon 9 plus 1 upon 9, which is equal to 3 upon 9 and which is equal to 1 upon 3. So 1 upon Ct is equal to 1 upon 3, or we can say that the total capacitance is 3 picofarad. So this is the answer of the first part of the problem. In B part, we have to calculate the voltage across each capacitor. Since each capacitor is having the same capacitance, so the total applied voltage for this series combination will divide equally between these three. So we can say that each voltage is same. Let us suppose the voltage across each is V dash. So V dash is the voltage across each capacitor. So the total voltage is 3 V dash, which is equal to the total applied voltage. So we can say that V dash is equal to 120 upon 3, which is equal to 40 volt. So the voltage across each capacitor is 40 volt. This is the answer of the second part of the problem. तो एक प्रॉब्लम पूछी गई, इसमें कहा गया कि तीन कैपेसिटर हैं 9 पिकोफैराड वैल्यू के, इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया है। पहले पार्ट में हमसे पूछा गया टोटल कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन की क्या होगी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 अपॉन सी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। C1, C2, C3 की रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे जो कि 9 पिकोफैराड ईच है। इसे सॉल्व करने के बाद टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल के आती है 3 पिकोफैराड। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इन तीनों सीरीज में लगे हुए कैपेसिटर्स के अक्रॉस इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हर एक कैपेसिटर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्योंकि तीनों में जो वोल्टेज है वो मिल रहा है टोटल अप्लाइड वोल्टेज से, तो हम कह सकते हैं 120 इज इक्वल टू 3 वी डैश। वी डैश हमने माना है यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज को, तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू निकल के आती है हमारी 40 वोल्ट्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।